Hello, my dear students. My name is Faisal bin Wahab. Yes, I am here to explain you the topics final accounts. As you know that final account deals with many more aspects, and especially if you want to be perfect in final accounts, you should be thoroughly very much perfect enough in adjustments. So today I am going to teach you few basics adjustments which are very much helpful for you. So the first adjustment which will appear is outstanding. So here you should understand what is the meaning of outstanding. Outstanding means the expenses of a business which is not paid in a particular accounting period. मीन्स ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस अपने 12 मंथ्स का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस ईयर में अगर बिजनेस ने इस एक्सपेंसेस को पे नहीं किया then it stands, that is called outstands or outstanding. So when it becomes outstanding, it means that it is a liability for you. ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको आपने पे नहीं किया वो आपके लिए बन जाएगा liability. So remember here, don't try to by heart these adjustments, try to understand the concepts and then try to record it in the final accounts when you are preparing. It will be helpful for you in intermediate and your degree level and for your even for your CSCPT level and for many competitive exams. So outstanding expenses are those expenses which are not paid in a particular accounting year. So when the business keep this accounting, when the business keep this expenses due, जब businessman अपने इस expenses को पे नहीं करता है तब जाकर ये बन जाएंगे outstanding and it is a type of a liability. अब आप इसको कहाँ पर लेंगे? फॉर एग्जाम्पल यू कैन गेट द क्वेश्चन लाइक आउटस्टैंडिंग वेजेस इन एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज. सो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ए ट्रेडिंग अकाउंट. देन एट लास्ट इट शुड बी टेकन ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ ए आउटस्टैंडिंग. सो हियर आई थिंक सो यू हैव गॉट द क्लियर इंडिकेशन of what is outstanding. On other hand, next quite opposite to outstanding is prepaid. What is the meaning of prepaid? Prepaid means the amount which you paid in advance. ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने एडवांस में पे कर दिया. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू पे द रेंट, आपको अपने शॉप का रेंट पे करना है, बिजनेस शॉप का. देन व्हाट यू हैव डन, यू हैव पेड इट इन एडवांस. 12 मंथ्स का आपका जो रेंट होता है, आपने क्या किया, उसको आने वाले 2 मंथ्स का भी एडवांस में आपने पे कर दिया. मीन्स आने वाले जो 2 मंथ्स है नेक्स्ट ईयर के, उसका आपने एडवांस पे कर दिया. सो यहाँ पर एक चीज़ हमको नोट करनी चाहिए कि जिस साल का आप अकाउंटिंग ईयर बना रहे हो, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, विच एवर ईयर इट इज़ माइट बी, सो उसी ईयर का एक्सपेंडिचर आपको रिकॉर्ड करना होगा अकाउंट्स में और उसी ईयर का इनकम भी आपको रिकॉर्ड करना होगा. तो इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग द अपकमिंग अकाउंटिंग ईयर, आने वाले अकाउंटिंग ईयर का आपको इसमें आपने जो पे कर दिया इसमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हेन इट इज़ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस यू हैव पेड एक्सपेंडिचर, सो दैट शुड बी डिडक्टेड. इसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे. दैट इज प्री. प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब पेड. आपने पेड कर दिया, पहले आपने एक्सपेंडिचर नहीं आने से पहले जो खर्चा आप पे करते हो, इट इज़ रिगार्डेड एज ए प्रीपेड एंड दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द expenses, or it can be taken it on a credit side of profit and loss account or a trading account. Then it should be transferred to the balance sheet, and where we will transfer, it is an asset. The expenses which you paid it in advance, आने वाला जो खर्चा आपने अगर एडवांस में पे कर दिया वो आपके लिए बन जाएगा एसेट. जैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गया, प्रीपेड आपके लिए हो जाएगा एसेट. सो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एसेट साइड. नेक्स्ट कम्स योर another expenditure which we will pay in the business year, like interest, anything receivables or anything payables. So any receivable becomes an asset, any payable items becomes an liability for you. Means अगर कोई expenditure है जिसको आपको पे करना है, like standing जिसको कह सकते हैं, so that should be taken as a liability, and anything which is receivable, it should be taken or regarded as a asset. Next comes accrued income. accrued income किसे कहेंगे आप? accrued का मतलब होता है the expenses which especially it is related with the income, accrued. So the accrued, any income which you have to get it again.
ऐसा इनकम जो अभी आपको मिलना बाकी है वो हो जाएगा आपके लिए अक्रूड. सो इट इज़ नथिंग बट इट शुड बी टेकन एज एन एसेट एंड इट शुड बी टेकन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. अक्रूड का मतलब होता है ऐसा इनकम जो अभी आपको मिलना बाकी है, ऐसा इनकम जो अभी आपके पास अभी आया नहीं. सो इट शुड बी टेकन इट इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट. उसको आप कहाँ पर लेंगे? एसेट में लेंगे. सो आज 3 टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी एंड एक्सपेंस, it should be taken on trading P&L account. Next, prepaid, it is an asset and it should be taken on profit and loss or a trading account debit side. It should be added to the concern expenses. Next, accrued is an income which you have to receive it and which you have not received. ऐसा इनकम जो अभी आपको मिला नहीं और आपने रिसीव नहीं किया, इसको आप एसेट के तरह रिकॉर्ड करेंगे and it should be taken it on a P&L account credit side. And I hope so we have hopefully I have completed this topic very perfectly, and try to read it again and again this, and then practice it, and inshallah you can overcome it. Okay, thanks.